I am at the geographical center of India, the winter capital of Maharashtra. Welcome to Nagpur. Nagpur, the orange city of India, is the third largest city of Maharashtra. This place is a hub for culture, art and food. यहाँ आपको विदर्भा की सबसे स्पाइसी क्विजीन मिलेगी, जिसे कहते हैं साउजी क्विजीन। पर बात अगर नागपुर के खाने की हो, तो तरी पोहा को कैसे भूल सकते हैं? Well, मुंबई से 2 घंटे की फ्लाइट के बाद the first thing I want to try in Nagpur is some delicious तरी पोहा। तरी पोहा नागपुर के रहने वाले लोगों के लिए it's not just food, it's actually an emotion। वही इमोशन जो मुंबई के लिए है वड़ा पाव, दिल्ली के लिए है मोमोज और बैंगलोर में रहने वालों के लिए है डोसा। I can't wait to savor this. Thank you. पेट पूजा तो हो गई, but now let's begin exploring this amazing city. फर्स्ट स्टॉप इज दीक्षा भूमि, जो एशिया का सबसे बड़ा स्तूपा है और दुनिया का सबसे बड़ा हॉलो स्तूपा है। ये वही जगह है जहां B.R. Ambedkar, the architect of our Indian Constitution, along with 6 lakh of his followers, embraced Buddhism. Did you know that Nagpur is the geographical center point of India? This is 0 Mile Stone, जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक पिलर, which is made of sandstone, which was built by Britishers in the year 1907. And because it is the center point of India, this point was used to measure all the distances to the prominent cities of India by the Britishers. और आज भी यहाँ पर distances marked out है to places such as Varanasi, Hyderabad, Jabalpur, Raipur, and many more cities, even Kanyakumari for that matter. Well, there's so much history in Nagpur. I wish मैं एक ही वीडियो में सारा कुछ कवर कर पाती. So I am passing by the Central Museum of Nagpur, which is one of the oldest museums of India. ये म्यूजियम divided है into 11 galleries. हर गैलरी की अपनी एक थीम है, be it tribal art, sculpture collection or even armor collection. But according to reports, the most visited gallery is the Natural Museum. But there is a unique variety of antlers, reptiles and fish. पास ही में है one of the most lively parks in Nagpur, Kasturchand Park. The park is usually bustling with various activities throughout the year. ये park located है about 1 kilometer away from the Central Railway Station. नागपुर आकर अगर गणेश टेकड़ी मंदिर के दर्शन नहीं किए तो क्या किए। तो मैं आ गई हूँ नागपुर के एक ऐसे मंदिर में जिसकी बहुत मान्यता है। सुना है हर बार जब सचिन तेंदुलकर यहाँ मैच खेलने जाते हैं, he definitely pays a visit to this temple. So I've also come here to try my luck. Isn't this a beautiful temple? Well, यहाँ के लोगों का मानना है कि गणेश जी यहाँ स्वयं प्रकट हुए थे और यहाँ आप जो सच्चे दिल से मांगो, आपकी वो मनोकामना ज़रूर पूरी होगी। खैर मेरे पास तो मांगने के लिए कुछ नहीं है, but all I could do is thank God for this wonderful life. Well, I saw a lot of places in Nagpur और इतना वॉक कर कर और घूम कर अब मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है. So I have come to a restaurant to try out traditional home style Nagpuri food. Let's see what's in store. I am at Chalet's Boutique Hotel situated in Somalwada, Nagpur. Welcome to Chalet. Thank you. Wow. Well, quite impressed by Nagpuri hospitality. अब देखते हैं नागपुरी खाना कैसा है.
होटल हैज अ ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल नागपुरी प्लस विंटेज इंटीरियर्स, जहां खाना आज भी एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से ना सिर्फ बनाया जाता है बट ऑल्सो परोसा जाता है। Also, I've got this delicious looking traditional home style Nagpuri food. As you can see, there's dal, खसखस की सब्जी जो बहुत रिच होती है. There is chicken, there is छाछ, मसाला भात, plain भात, वांगण्याचा भरीत आणि ठेचा. I also have a puran poli which is full of ghee, and I've got the hirvi mirchicha ठेचा. Is a Maharashtrian thali ever complete without that? I can't wait to relish this home style food. थाली के पास फूल, आलू में अगरबत्ती. दिस इज सो हार्ट वार्मिंग. महाराष्ट्र की खूबसूरत जगहों के बारे में आप जान सकते हैं उनकी वेबसाइट पर. एंड ऑल्सो रिमेंबर टू फॉलो देम ऑन सोशल मीडिया. Wow, this is so pretty. I've now come to Ambazari Lake and it is a very pretty looking lake. As you can see, overflow हो रहा है यहाँ से पानी जो साल में सिर्फ एक ही बार ऐसा होता है. It's got a beautiful garden and it looks like a popular picnic spot amongst the locals living here. Do you know it's scientifically proven that after watching sunrises and sunsets, you feel much more grounded and grateful? Well, I'm going to do just that at this perfect spot in Nagpur. इस लेक को बनाया था सन 1870 में to supply water to the city. नागपुर की नाग रिवर इसी लेक से ओरिजिनेट होता है. यहाँ एक सेल्फी पॉइंट भी है which is perfect for your Instagram. Well, अब मैं आई हूँ नागपुर के ऐसे म्यूजियम में that is India's only narrow gauge rail museum. यहाँ आपको वो narrow gauge trains देखने को मिलेंगी जो अब बंद हो चुकी है. So this is the only place where you can see अलग-अलग तरह की coaches है, engines है, be it steam engine और diesel engine, और यहाँ की टिकट का प्राइस है सिर्फ 25 rupees. So come on, let's go in. The museum includes approximately 1,000 artifacts from over 80 narrow gauge railways from different parts of the UK. Well, what I am most excited about is this toy train which is called the Orange City Express. Let's go in. This is so cool. ये म्यूजियम एक इंफोटेनमेंट पार्क है for the vintage and old narrow gauge trains. पर यहाँ पे दूसरी इंटरेस्टिंग चीजें हैं जैसे रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स, अम्यूजमेंट पार्क और ऑडिटोरियम. This is so cool. यहाँ एक रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट भी है. वैसे फिलहाल ये बंद है बट आई एम श्योर घूमते हुए खाना खाने में बड़ा मजा आएगा. Well, after that long day of exploration, all I need is a comfortable stay, and what better place than Le Méridien Nagpur. Well, this is the LM Suite, very spacious, comfortable and a little outside of the city, offers all the calmness and quiet that you need, and a perfect place to make a pit stop if you wish to explore the jungles of Nagpur. That's my plan for tomorrow, but for now I'm told there's a delicious Sauji Thali waiting for me.
morning from Nagpur. Well, Nagpur is also known to be the tiger capital of India और यहाँ आसपास कई सारे जंगल हैं. तो आज मेरा एजेंडा है टू एक्सप्लोर द जंगल्स ऑफ नागपुर. तो सबसे पहले मैं जाऊँगी टू तडोबा नेशनल पार्क, पर रास्ते में कई सारी ब्यूटीफुल स्पॉट्स है विच वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर. सो लेट्स गो. On your way to Tadoba, there's also one of Maharashtra's biggest forts, the Chanda, also known as Chandrapur Fort, जो 15th या 16th century में built किया था नागपुर के गौंड किंग हंदक्या बलशात ने. We loved Nagpur's city life, but now let's dip our feet into the wild side of Nagpur. Did you know that Nagpur is also called the tiger capital of India? Well, to see the actual wildlife, the best time to visit the park is mostly in the summer months. But it's all about how lucky you are. But as for me, what better way to end my trip than having a little time by myself amidst nature? This beautiful jungle safari is all that I need. Well, बहुत मज़ा आया इस ट्रिप में. From Mumbai's Vada Pav to Nagpur's Tari Poha, from the concrete jungle to the real jungle. My trip to Nagpur has not only been enriching but also a lot of fun. पर अब वक्त आ चुका है अपनी बैग्स पैक करके मुंबई वापस जाने का. I really hope you enjoyed watching this series I Love My Maharashtra with us. Remember, you can follow Maharashtra Tourism on all social media platforms. Also visit their website to get all relevant information. Until then, it's me, Kamya Jani, signing off.